अब हम पपेट्री से आगाज़ करते हैं। पपेट्री चूँकि हम अपने बचपन में डिफरेंट फेस्टिवल्स पे जाया करते थे, देखा करते थे, पपेट से इंटरैक्ट किया करते थे और वो एक टाइम आउट होता था हमारे बचपन में और एक आसान लर्निंग होती थी। सिंपलिस्टिक लर्निंग थी, कैजुअल लर्निंग थी। अ, आज के दौर में हमारे बच्चों के पास वो कैजुअल लर्निंग है बट इन अ डिफरेंट फॉर्मेट व्हिच इज़ थ्रू द मीडिया, थ्रू द टेलीफोन्स, थ्रू द इंटरनेट स्क्रीन्स। उन दोनों में फ़र्क क्या है? इन टर्म्स ऑफ ज़ाहिर है अगर एक ऑडियंस के तौर पे बात करूँ तो मुझे लगता है कि जो एक स्टेज पे जाकर या थिएटर पे जाकर किसी परफॉर्मिंग आर्ट्स को एक्सपीरियंस करना है वर्सेस मोबाइल पे, उन दोनों की रिटेंशन में बहुत फ़र्क है, उन दोनों की अपलॉड में बहुत फ़र्क है। और रिटेंशन क्राउड के लिए है, अपलॉज जो है वो परफॉर्मर के लिए है। उन दोनों में बहुत फ़र्क आ गया है। हाउ डू यू लुक एट दैट? You know, it's very important like we visit a lot of schools. We had first two puppet theaters in Karachi. उससे पहले there was no concept के what is a puppet theater, you know. And I remember when I took this proposal to Unilever, and there was a very good friend now. I still am in contact with this great person. His name was Irfan Mustafa. Okay. Irfan Mustafa sahab ne, he was the brand manager then. So I gave him this proposal that I'm building this puppet theater, and it's going to be in this space. This is Alliance Francaise. They've given me, the embassy has gifted me for 2 years this space without rent, and they're giving me electricity. And I want to launch this puppet theater which will operate every day. So I remember one thing, that he got up and he closed the door. And then he came back and he sat. And it was the Signal Puppet Theatre. I was talking to the brand manager of personal care, you know, all. Okay. He said, are you serious? Can you handle this? I said, yes, this is what I do. Yeah. So it was like very easy to sell it to a person who was culturally gifted, intellectually aware थे वो, इरफान मुस्तफा साहब। अगर कोई और ब्रांड मैनेजर होता कहता पता नहीं है क्या 2 साल के पहले 3 हफ्ते का तो करके दिखा। But that theater came up in Karachi, and कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि बच्चों का एक puppet theater होगा। वहाँ पर स्कूल्स आने शुरू हुए। Schools started inviting the puppet theater into their own premises also, all over Karachi. उसके बाद tours शुरू हुए, and we could feel के difference of enjoyment of kids, कि theater में एक different feeling थी उनकी, क्योंकि वो एक community में बैठे हुए थे, different parents थे, different बच्चे जिनको वो जानते ही नहीं थे, और फिर वो puppets बाहर आती थी, physically puppeteers लेके आते थे, and they would hug them, and some would be very scared, some would be taking pictures. And then in the school, puppet theaters used to be, performances used to be like concerts. Because one small thing and you know. So I think it's very important for children to learn through medium of arts. Firstly, and medium of arts is very important. Bishop of उसको step wise लेके जाएं, and we've done a lot of work. We have created a lot of songs. Today we have almost 300 songs done specially for children. And अभी recently हम performances कर रहे थे बच्चों की, जो हम 50 districts में 3 साल से हम काम कर रहे हैं of Punjab. And what we do is just go and educate them through entertainment, but we are putting an exercise in their mind that early marriage, family planning का वो project है. लेकिन उसमें
पपेट्स भी हैं, उसमें 2 एक्टर्स भी हैं, उसमें वो बच्चे भी हैं, उसमें वो मैसेज भी है, उसमें वो कम्युनिटी भी है, सारी टीचर्स भी आए हुए हैं एंड आई थिंक वो एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है टू बी पार्ट ऑफ इट एंड व्हेन इट कम्स टू गेटिंग इन्वॉल्व विद पपेट्स फिर हमने वर्कशॉप शुरू की फिर हमने इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल लाहौर में फर्स्ट फेस्टिवल वाज इन 92 वाज जब हमारा इंटरनेशनल वर्क शुरू हुआ था language is not a barrier. I think it's your mind and the visual going in front of you performing in different any song, Punjabi ho, Bhangra ho, yeah, it's a song from gypsy music or anything. I think it's a visual and uski presence, uski feeling बहुत important है. You're right there. You can and after the show. You see that how it was running also because the puppeteer brings it out and even in my memory I don't remember going to many puppet theaters but I remember one puppet theater my brother took me Salman me and Fazan we went to this open air theater in Baghe Chana तो एक memory वो है मेरी एंड वो चेक रिपब्लिक से वो पपेट थिएटर आया हुआ था एंड आई रिमेम्बर दैट सॉन्ग अंडर द मैंगो ट्री यू नो वो उन्होंने ऑब्वियसली दे वर यूजिंग दैट सॉन्ग एंड द पपेट थिएटर वाज देयर एंड देयर वाज अ ट्रेजेडी विद दैट पपेट ग्रुप वो पीआईए का क्रैश हो गया था दे डाइड व्हेन दे वर एयरबॉर्न और व्हाटएवर द सेकंड पपेट थिएटर जो थोड़ा सा मुझे पूरा नहीं याद वो माल अलहमरा में मिसेस फैज एंड सलीमा एंड मुनीजा they used to Auntie Faz used to do some things you know she had a puppet theater and उसमें Anna Molka भी she would make puppets and so this theater I've a vague memory being there एंड एक हमारे घर में कोई every 2 months या 3 months में एक folk puppeteer आया करता अच्छा you know it used to be a morning visit तो वो आके puppet दे छोड़ के चला जाता था and he would had this whistle and he would then come in the evening and it used to be जो भी 3-4 दफा मैंने देखा it used to be the whole family watching it वो एक्सपीरियंस जो था वो होल फैमिली का था इट वाज नॉट के बच्चे जाके देख लें सो वो रिचुअल्स खत्म हो गए वो कल्चरल एस्पेक्ट जो है एंड स्कूल्स के अंदर भी आई वाज इन सेंट एंथनीज ऑल माय टेन्योर इन स्कूल आई नेवर सॉ एनीथिंग about arts it was a great school I have nothing against the school but sports थी एंड वो पीटी थी फुटबॉल का मैच हो गया हॉकी का मैच हो गया बट नो आर्ट्स